श्वेता 35 years old, लाइफ ऑडिट हुआ, फाउंड टू बी सफरिंग इन ऑल द मेजर एरियाज ऑफ लाइफ. हेल्थ खराब है, डिटीरियोरेटिंग है, हाइपर एंजाइटी है, नींद नहीं आती है रात को, एपेटाइट इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग, शी ओवर ईट्स, शी बिंजेस, नोइंग द फैक्ट कि शी नीड्स टू लूज वेट लूज किया भी है ओवर द टाइम, बट स्टिल शी नीड्स टू लूज अ लॉट मोर. शी इज नॉट स्लीपिंग एट ऑल इन द नाइट. सुबह उठने का मन नहीं करता है, बिकॉज बिल्कुल भी बेड से निकलने का मन नहीं करता है, एनर्जी इतनी कम है. शी इज सफरिंग इन हर करियर, बिकॉज वो पिछले 13 सालों से एक ही पोस्ट पे चलते चली जा रही है. 13 साल काम करने के बावजूद भी हर सैलरी इज ओनली इन 30s. She knows that she deserves way much more, but she is not able to do anything about it. Why? Lack of self-love, intense self-doubt on herself. She is also suffering in her relationships. बहुत ही लगातार नॉन स्टॉप शी इज अट्रैक्टिंग ओनली टॉक्सिक पीपल इन हर लाइफ. आते हैं, टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, मेक हर फील स्मॉल एंड दे गो अवे. वंस अगेन दे कम बैक, शी गेट्स होपफुल, फिर कुछ बात आगे बढ़ती एंड दे लीव. She is suffering in all her areas of life only because of one reason, that she is still wounded from her past life, from her childhood, and she has not healed herself. So when we did the life audit for her, Shweta को ये 100% convinced है कि whole healing and coaching will definitely help her, and she wants to join also. But ये जो but आ जाता ना हमारी women की life में, so but she is giving herself all the excuses that are crafted only for women, mostly for women, I mean. अभी पैसे नहीं है, अभी मुझे कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं लाइफ में, मुझे पूछना पड़ेगा, मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, मैं आपको कुछ दिनों बाद बताती हूँ, आई सो वॉन्ट टू डू इट बट आई एम नॉट एबल टू डिसाइड इट फॉर नाउ. सो ये जो हमारा एक्सक्यूज गिविंग है ना अपने आप का ना, एंड दीज आर एक्सक्यूजेज बाय द वे, these are excuses because the mind is stopping you from working on yourself, because the mind knows कि अरे she is up to something now, she is going to heal herself, it is going to be a new zone, it is going to be a lot of effort, और mind आपको blocks and barriers देता चला जाता है. Now the thing is, the question is, if you really want to change your life, if you are really done with it, if enough is really enough for you now, if this is something that you want to stop suffering here, then my dear friend, you have to go ahead. Shweta has to go ahead and take that discomfort. Again, change her belief about herself and what she deserves in life. Go ahead, take the risk, take the plunge, invest in herself and transform her life. My dear friend, if this story sounds similar to yours, if you are waiting for one thing or the other to get over so that you can get free time, energy and money to invest in yourself, it means that you are keeping yourself last in the priority. If you heal yourself, your life changes, and when your life changes, your loved ones' lives also change. Think about this. And if you are sincerely wanting to work on yourself, comment below clarity and connect with us. We are going to help you take that first step. Love yourself. Your world begins with you.